Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Imagine for a moment the complexity and beauty of the human body, the intricate network of cells, tissues, and organs that harmoniously function to sustain life. Yet, within this remarkable system, there exists a vulnerability, a flaw that can lead to devastating consequences if left unchecked. Cervical cancer is a stark reminder of this vulnerability, a disease that can alter the course of lives, families, and communities. Welcome, everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from THIP Media, and today this discussion is on a significant health condition known as cervical cancer. And to help us understand this condition, we have with us Dr. Ekta Singh. Dr. Ekta Singh is a highly skilled gynecologist and obstetrician, proudly hails from the esteemed KGMC, Lucknow. She embarked on her professional journey as a senior resident at Lady Harding, Delhi, currently serves as a distinguished senior consultant at Cloud9 Hospital in Noida. Dr. Ekta is the recipient of prestigious accolades, including the Sri Prabhu Daya Baveja Memorial and UP Ratna Ayushman Awards. With a wealth of over 2 decades of experience, she has overseen more than 10,000 deliveries. Furthermore, Dr. Ekta Singh holds prominent roles within NOGS, serving as both the treasurer and former joint secretary. Her extensive expertise has led to numerous national and international publications. So, when seeking her guidance, you can expect not only problem-solving approach, but also a holistic perspective that nurtures the body, mind, and soul. Dr. Ekta, THIP Media welcomes you, ma'am. Yeah, Dr. Soumya, thank you. Thank you so much for joining us today, ma'am. And as you know that cervical cancer, it could be a life-threatening condition. जानलेवा हो सकती है अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो हम I'm going to start off this discussion by asking कि cervical cancer होता क्या है? What exactly is cervical cancer? और इसको हम एक preventable condition क्यों बोलते हैं? Okay, Soumya. Cancer, cervical cancer is a cancer of womb, mouth of the womb. Womb Right. is the uterus. In a female body, the uterus or womb has three parts. One is body, second is neck, and third is the mouth of the uterus. That is called cervix also. When the जी, cancer develops in the mouth of the womb, that is cervix, it is called cervical cancer or cancer of the cervix. Okay. जी, And why it is preventable cancer? Because of two reasons. First reason is this cancer associated with majority of the cancer bulk, around 70-80% of cervical cancer is associated with a infection called human papilloma virus infection. So okay, if we prevent the infection, then we can prevent the cancer also. Second जी, basic reason is when this cancer starts, it takes years to develop from a precancerous lesion to a जी, cancerous lesion. So if जी, we detect the precancerous lesion, that is very easy to treat, then we can treat a lady or girl earlier in a easier way. So due जी, to two reasons, one is it is cause is infective, and second it takes a long time. to develop. Okay. ओके सो जैसे कि आपने अभी बताया कि इसकी एसोसिएशन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से है तो मेरा सवाल अब है कि व्हेन इट कम्स टू सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन जो उसके की रिस्क फैक्टर्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है तो क्या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अलावा आर देयर एनी अदर रिस्क वायरस अदर रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर Okay, Soumya, Dr. Soumya. First of all, because this cancer happens due to this HPV virus infection, so the risk cancer is associated with this infection only.
Like if we go for better hygiene, we can prevent this cancer. So, unhealthy sexual intercourse or unsafe sex, like if we don't use protection during the sex, like barrier contraceptive, that is condom, then if we have multiple sexual partner, this is a risk factor for cervical cancer. Then Right. unhealthy lifestyle like smoking, like sedentary lifestyle. Whenever our immunity goes down due to bad nutrition, it is a risk factor for the cervical cancer. And you've said that it takes a long time to develop. Right. So as cervical cancer progresses to its stages, I'm sure women might be experiencing a couple of symptoms. So could you elaborate on the common symptoms or warning signs of cervical cancer? Initial days, it may be completely asymptomatic, Dr. Soumya. But Okay. with time, we can develop symptoms. The first symptom, we can develop the vaginal discharge. And second is spotting during the intermenstrual time. In between the menses, the lady may feel spotting of or bleeding vagina per vagina. Ji. But the discharge is very common with few other benign conditions like fungal infection or any vaginal infection. But this infection causes the discharge with burning, Okay. itching, and redness. But the Okay. discharge of cervical cancer is usually associated with foul smell, Okay. and sometimes blood mixed discharge is there, but usually not associated with itching and redness. And the second thing about spotting or bleeding during the in between the menses, specifically in cervical cancer, this is associated with just after sex. Actually, post-coital bleeding is specific of cervical cancer. It means when the Okay. lady or girl goes for the intercourse, there a blood comes out after that, that is called Right. postcoital bleeding. It may be a symptom of cervical cancer. Right, ma'am. So another important thing that actually comes to my mind is the screening for cervical cancer. That someone who is observing these signs, and they should probably undergo regular cervical cancer screening. तो आप उस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, and please just help us understand the significance of the commonly used tests and these regular screenings. एंड ये स्क्रीनिंग्स के बीच का जो इंटरवल है, जो टाइम फेज है, वो कितना होना चाहिए महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए? हाँ सौम्या, क्योंकि ये कैंसर है प्रिवेंटेबल वन, एंड वी आर seeing that how much cancer is prevalent nowadays. Every kind of cancer, either breast cancer or other uterus cancer and cervical cancer, and this is the only cancer which is preventable. So जी. definitely screening tests are very much important because they can prevent or detect early the cervical cancer. Like जी. one thing is, have you heard about pap smear or liquid based cytology? This is very good जी. test. And pap smear is the test which we take during the perispeculum examination, or we can say during the examination of patient. And जी. we take just a swab and make a slide. And जी. the newer technique is the recent advancement is this liquid based cytology, in which we take the swab kind of sample, but we जी. rinse in a bottle type of thing, in a tube type of thing, and the whole cells goes into that fluid, and then we centrifuge and take out these cells to see whether they have the cancerous cells or no not. So जी. sensitivity and specificity are more with the liquid based cytology, but the pap smear itself understood by this liquid based cytology. We जी. use both the term for the same. So जी. first is this pap smear or liquid based cytology. Second is HPV DNA testing, human जी. papilloma viruses, the causing agent. So we can जी. detect during that smear test only. With the one sample, we can take both the for both the test. जी. And what when we should start these tests? So at the age of around 21 to 25 years, we can
start going for this test, pap smear or जी liquid based cytology. जी Every 3 years we go for the test. And जी if a girl or lady is sexually active much before this 21 years age, then जी at least 3 years, latest by 3 years after starting this sexual activity, we can go for this pap smear test. And जी 3 years till 30 years, after 30 years, we go जी for HPV test along with this pap smear test. जी And if the HPV DNA test is negative, जी we go for every 5 years till 65 years of age of the राइट lady. Okay. जी So, and we can leave the screening test at 65 years age if the 3 consecutive smears are normal. जी And uh, I think this is, yeah, ओके these are the screening tests. Yeah. तो आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर कोई अपनी स्क्रीनिंग्स नॉर्मल रखता है, डॉक्टर के पास में रेगुलरली विजिट करता है, उसके बाद भी अगर किसी में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो गया है, तो व्हाट आर द अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस नाउ फॉर सर्वाइकल कैंसर? एंड प्लीज एक और चीज पे भी हम ध्यान देंगे यहाँ कि डज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द पेशेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल सौम्या, अगर वो जा रहे हैं लगातार स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, तो चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर बहुत कम होंगे। जी और अगर होते हैं तो बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाएंगे। और जी डेफिनेटली ट्रीटमेंट चॉइसेस आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेज ऑफ द स्टेज कैंसर। जी सो अगर अर्ली स्टेज में हमने पता कर लिया है ड्यू टू दीज स्क्रीनिंग टेस्ट, तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है। फर्स्ट इज कोनाइजेशन, जिसमें हम सर्विक्स का बस, नॉट पूरी सर्विक्स, थोड़ा सा सर्विक्स का जी कोन निकाल लेते हैं एंड वी कैन ट्रीट द लेडी। द सेकेंड इज लीप, लार्ज ओ लूप एक्सीजन कहलाता है। उसमें क्या जी करते हैं हम, कॉटरी के जरिए, जहां पे वो सर्विक्स में जो कैंसर, हम जानते हैं ना सौम्या कि कैंसर डेवलप होता है एक सिंगल सेल से। जी उस सेल से, वो म्यूटेटेड सेल से वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो शुरुआत में वो बहुत लिमिटेड स्पेस पे होता है, और हमने जी अर्ली पता कर लिया है तो हम सिर्फ उतने पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं इन लीप treatment. Then जी comes the radical trachelectomy. जी Trachelectomy is we are doing this very less nowadays because ओके we go for radiotherapy and hysterectomy. But trachelectomy में क्या करते हैं, पूरी की पूरी cervix remove कर देते हैं, जी यूट्रस छोड़ देते हैं। Then comes the hysterectomy. Hysterectomy में भी simple, सिर्फ यूट्रस निकाल के छोड़ दिया। And it may be radical, जिसमें हमने यूट्रस भी निकालना है सर्विक्स के साथ ऑब्वियसली, एंड ट्यूब्स एंड ओवरीज भी निकालनी है। देन जी कम्स द रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी भी हम अर्ली केसेस में कर लेते हैं जिसमें हमने कोई सर्जरी नहीं की। जी रेडियोथेरेपी में बी कंबाइंड विद द सर्जरी। अगर स्टेज जी हमारी एडवांस हो गई है, बाई चांस हम स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं थी और एडवांस हो गई है, तो फिर हम रेडियोथेरेपी सर्जरी के पहले भी दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नियो एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। ओके And then comes some medicines we can use for the treatment of the cancer, that is हम्म immunotherapy, chemotherapy, and we can use the combined therapy also. तो क्या इससे बचने का भी कोई तरीका है? आई मीन बचाव हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर समझा जाता है। Absolutely. So are there any preventive measures that women can take to lower their risk of developing cervical cancer? And one another thing is that are there vaccines available that could help with cervical cancer? Yes, so में किसी भी प्रिवेंशन के हमारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी जी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब हुआ कि जब हम उस डिजीज को होने से पहले ही प्रिवेंट कर दें, जिसके जी लिए आपने बात की थी रिस्क फैक्टर्स हमें जानने चाहिए। तो हम जी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अवॉइड कर सकते हैं, हम बैरियर मेथड यूज कर सकते हैं, सेफ सेक्स के लिए जा सकते हैं, हम अच्छी लाइफस्टाइल रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सेक्सुअली इंटरकोर्स के लिए जाओगे तो हम सभी को, एवरीबडी गॉट द दिस गेट्स दिस HPV इन्फेक्शन, सभी को होगा। बट विथ जी टाइम ये अपने आप बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से गायब हो जाता है बॉडी से। इसीलिए 30 इयर्स के पहले हम कभी HPV वायरस चेक नहीं करते, क्योंकि जी होगा ही होगा यार, सेक्सुअली एक्टिव हैं तो होगा, बट वो गायब हो जाएगा हमारी अच्छी इम्यूनिटी की वजह से। इसीलिए 30 इयर्स के बाद अगर वो परसिस्ट कर रहा है बॉडी में,
तब हमें डेफिनेटली ये रिस्क फैक्टर की तरह नजर आता है कि बॉडी ने इसको गायब नहीं किया, नाउ इट कैन हार्म द सर्विक्स एंड कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो जी हमें क्या करना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है अच्छी लाइफस्टाइल से। अच्छी लाइफस्टाइल को एक बार अगर हम काउंट डाउन करें तो पहला चीज कि हम अपना न्यूट्रिशन पे अच्छा ख्याल रखें, डेफिनेटली हेल्दी जी फूड खाएं। देन हम थोड़ा सा एक्सरसाइज, हम सबके पास टाइम नहीं है बट 15-20 मिनट्स तो एटलीस्ट अपने लिए हमें निकालना चाहिए यार, थोड़ा सा जी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग एनीथिंग। आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स आर वेरी गुड फॉर गुड ऑक्सीजनेशन ऑफ आवर टिश्यूज, तो उनकी हीलिंग पावर अपने आप अच्छी हो जाती है। जी देन कम्स द स्क्रीन टाइम। हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, अभी भी हम स्क्रीन के जी टाइम सामने हैं, तो इससे हमारी जी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, इंक्लूडिंग 2 more S। वन इज स्ट्रेस, जो हमने भर भर के पाला हुआ है। इट्स नॉट कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, नो, बट हम हर समय यहाँ माइंड में हमारी कमेंट्री चल रही होती है ना, हम सोच जी रहे होते हैं अगला काम क्या करना है। जैसे मेरे माइंड में आ रहा है अभी फोन ना बज जाए, हॉस्पिटल ऊपर 3 पेशेंट लेबरिंग है, ऐसा ना हो फोन आ रहा होगा मैंने साइलेंट कर रखा है। तो ये सब चीजें हमारे माइंड में जो चलती हैं वो भी हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। एंड थर्ड एस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज के लिए, हमारी सारी ही इलनेसेस के लिए, स्लीप साइकिल। हमारा स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, हम टाइमली सोएं, टाइमली उठें, एक अच्छी क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन फोर्थ एस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली द सर्वाइकल कैंसर, दैट इज स्मोकिंग। नाउ डेज जी ये स्टेटस सिंबल हो गया है ना, we drink, we smoke, and we feel a little bit on higher pace. So जी that is actually harming our body. So we should understand when it is harming our body. Okay, so these are the risk factor at prevention, primary prevention we can do with this. जी Secondary, by these vaccine, जो आपने बात कही बेटा सौम्या, डॉक्टर सौम्या, तो हमारा अगर कोई चीज हमारा किसी वायरस से या किसी जी बैक्टीरिया से हमें हो रहा है, जैसे जी सारी इन्फेक्टिव डिजीज, चाहे कोरोना वायरस हो, कोरोना इन्फेक्शन का हमने वायरस के लिए वैक्सीन लिया, सेम वे जी हमारे पास अगर एचपीवी वायरस से हमारे को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है जी 70-80% केस में, तो हम उसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हमारी सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एचपीवी वायरस हमारा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अराउंड 150 टाइप ऑफ सिमिलर रिलेटेड वायरसेस का कॉम्बो है, जी जिसमें से कुछ वायरस एचपीवी हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कैंसर कॉज करते हैं, जिसमें से 16-18 आर द मोस्ट कॉमन। अदर देन दैट देयर आर 51, 52, 58, 31, 33, 45, ये स्ट्रेन भी हाई रिस्क कहलाते हैं, सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। एंड देन जी 6 and 11 इज कॉजिंग द जेनाइटल वॉर्ड्स। आपने सुना होगा ओके जगह जगह हमारा जेनाइटल एरिया पे या कहीं कहीं वॉर्ड्स होते हैं, छोटी जी सी जी बिनाइन सी ग्रोथ होती है, दैट इज ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 and 11 टाइप। So ओके we have these vaccines available for the cervical cancer prevention. One is bivalent, जी second is quadrivalent, third is nanovalent, which is available right now only around 6 months, since 6 months back. जी So first is bivalent. This is for 16 and 18. जी This vaccine is almost disappearing from the market in within these 6 months when this nanovalent appeared. जी Then the second one is quadrivalent. This is for 6-11, that is causing the genital warts, and 16-18, which is the major contributor for the cervical cancer. Now जी the nanovalent is available. This is for 6-11, 16-18, एंड वो सारे जो हमारे 31, 33 और 52, 58 वाले थे ना, 45, ये सारे के लिए ये नैनोवेलेंट काम करता है। इनके रेट्स ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट हम इसको दे कब सकते हैं? We should start giving the vaccine since the age of 9 years to both ओके the females and the boys and girls. Both should ओके take the ideally, but at least girls should definitely ले receive ले these vaccines. तो 9 साल से 15 साल तक हमें सिर्फ 2 डोज की जरूरत है, जी 0 डोज, एंड 5-6 मंथ्स बाद सेकेंड डोज देते हैं हम। जी एंड
इन छोटे बच्चों को हम बहुत आराम से नैनोवेलेंट भी दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली नैनोवेलेंट अभी आई है, हमारे पास ट्रायल फेज में है, तो हम क्वाड्रिवेलेंट के लिए भी जा सकते हैं। एज पर द चॉइस ऑफ द लेडी, वी कैन इन्फॉर्म देम pros and cons, and they can. Then after 15 years, we can go for the vaccine, but we have to go for 3 doses: 0, 2 and 6. फर्स्ट इज द 0 डे इज जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उसके 1 से 2 महीने बाद हम सेकेंड डोज देते हैं। 1 महीने बाद तब देते हैं जब हमारे पास वॉर्ड्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी में वॉर्ड्स नहीं है तो हम 2 मंथ्स बाद रिपीट करते हैं उसको, और 6 मंथ्स बाद हम थर्ड डोज देते हैं। मान लो अब डॉक्टर सौम्या कि ये छूट जाती है हमारी, किसी वजह से पेशेंट कहीं गई हुई है, भूल गई और मिस हो गई, तो ये रिकमेंडेशन है कि वी शुड नॉट रिपीट द कंप्लीट कोर्स. We can receive that vaccine as early as possible, that missed dose, right? तो अगर कभी मान लो 6 महीने का 8 महीने भी हो गया, चलो 1 साल भी हो गया, तो ठीक है यार, अभी ले लेते हैं जी, ठीक है, दैट इज अ रिकमेंडेशन. और हाँ, एक लास्ट बात कि ये 43 इयर्स के बाद यूजुअली इसका कोई रोल नहीं रह जाता है. 40 इयर्स तक इसको 43 इयर्स या 40 इयर्स तक कहते हैं कि आप ले सकते हो. So the ideal would be Okay. between 9 to 15 for both young boys and girls. Right now. Okay. Yes. ठीक है. And how does health literacy would impact health outcomes in context of cervical cancer? And how can doctors contribute in promoting this health literacy amongst patients? Health literacy always helps for the awareness of any health issue. First, for any health issue, we should know the information should be right and from the authentic source. Then only we can act accordingly. As a health worker, what we do, we always try to counsel. जब भी हमें time मिलता है, if a young girl comes to us, we can counsel. This is the ways. That is one cancer. We have the ways, or at least you can go for the safe sex practices, because sometimes the young girl comes to us nowadays. They come to us for contraceptive choices, for unwanted pregnancy, how to prevent them. So we can guide them and at that way. And just after the delivery of the girl, lady, जब उसने अभी प्रेगनेंसी थी और अभी बेबी बर्थ किया है, उसके बाद we form a routine thing कि आफ्टर बेबी बर्थ हम उनको गाइड जरूर करते हैं कि यार देखो, एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन होती है, यू कैन गो फॉर दैट. एंड यूजुअली दे आर नाउअडेज पीपल आर अवेयर. एंड समटाइम्स तो यंग गर्ल आती है, वो कहती हैं कि वी आर सेक्सुअली एक्टिव मैम, मुझे पैप स्मीयर के लिए जाना है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन. तो दे आर द पर्सन जो हमें याद दिलाते हैं कि यार बाकी जो नहीं पूछ रहे उनसे भी पूछो, क्योंकि एक पेशेंट ने अभी आके कहा है. तो डेफिनेटली वी आर डूइंग दैट. सो बेसिकली पेशेंट का अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और सही टाइम पे डॉक्टर को विजिट करना बहुत जरूरी है. That beautiful note, Dr. Ekta, we deeply appreciate your presence today, ma'am. And we actually have high hopes that this session will prove to be incredibly beneficial for all the young girls and women. Thank you so much for joining us today. Thank you, yaar. Great pleasure. Thank you. Thank you, ma'am. And for more such informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you once again, ma'am.